Hello students, this video is for grade 2nd. Let us start. We have 3 different sections in this sheet. We will learn about 3 different subjects: Maths, English and EVS. Okay? So let us start with Maths. Circle the number that comes in between. Okay? In this, what we have to do is, we have to circle the number that comes in between. हमें उस नंबर को सर्कल करना है जो बीच में आता है. Means you can see blue colored numbers. Okay, blue color के जो numbers दे रखे हैं, इन दो numbers के बीच में कौन सा number आता है उस पे हमें circle करना है. Okay, so in the first question 8 and 10. 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9 या फिर 11. 8 और 10 के बीच में क्या आता है? Which number comes in between 8 and 10? Yes, 9. Very good. 9 comes in between 8 and 10. Very good. Second, 16 and 18. Which number comes in between 16 and 18? 16 और 18 के बीच में कौन सा नंबर आता है? Yes, 17. Very good. 17 comes in between 16 and 18. 16 और 18 के बीच में 17 आता है. Very good. Now see the third. 20 and 22. 20 और 22 के बीच में कौन सा नंबर आता है? Think. Which number comes in between 20 and 22? 21. Yes, 21 comes in between 20 and 22. 21 आता है कहाँ पे? 20 और 22 के बीच में. 20, 21, 22. Okay? So, in this way you have to circle. Okay, you have to circle those number which comes in between. दिए हुए जो numbers हैं, इनके बीच में जो number आता है, हमें उन पे circle करना है. As you can see in the picture. Okay, so what you have to do in this, you have to circle the number पे circle करना है जो दो numbers के बीच में आता है. Okay, very good. So okay, one time we will revise number names. Okay, today we will revise number names. हम number names revise करेंगे 1 से लेके 20 तक. Okay, from 1 to 20. Everyone repeat with me. 1. O N E. 1. O N E. 1. 2. T W O. 2. T W O. 2. T H R E. 3. T H R E. 3. 4. F O U R. 4. 5. F I V E. 5. 6. S I X. 6. 7. S E V E N. 7. 8. E I G H T. 8. 9. N I
N E 9. 10 T E N 10. 11 E L E V E N 11. 12 T W E L V E 12. 13 T H I R T double E N 13. 14 F O U R T double E N 14. 15 F I F T double E N 15. 16 S I X T double E N 16. 17 S E V E N T double E N 17. 18 E I G H T double E N 18. 19 N I N E T double E N 19. 20 T W E N T Y 20. Okay, so we have read number name from 1 to 20. So in maths, what we have to do is we have to circle the number that comes in between. Okay. Now see the next section, which is of English. Write plural form of the following nouns. What we have to do in this question, we have to write the plural form. हमें इनके plural forms write करने हैं. We have to write the plural forms for these following nouns. Okay, यहाँ जो भी nouns दे रखे हैं, इनके हमें plural form write करने हैं. So you can see the first word, block. B L O C K, block. B L O C K, block. इसको हमें plural form में change करना है. So for changing into plural, what we will do, we will add S और ES. Okay, S या फिर ES का add करके हम plural में change करेंगे. So we will add S in this. Blocks. It will become blocks. B L O C K S, blocks. Pot. P O T, pot. We will convert this into plural. What will it become? It will become pots. P O T S, pots. Pan. P A N, pan. We will change it into plural. It will become pans. P A N S, pans. Plate. P L A T E, plate.
The plural form of plate will be plates. P L A T E S. Plates. Dish. D I S H. Dish. Dish means मतलब हम जिसमें खाना खाते हैं, बर्तन, उसको हम डिश भी कहते हैं. ओके. और एक डिश होता है जो हम कहते हैं जैसे स्वीट डिश, या फिर जो हम खाना खाते हैं हम उसे भी डिश कहते हैं. डिशेस. इट विल बिकम डिशेस. वी विल ऐड ES. इसमें हम ES ऐड करेंगे. डिशेस. DISHES. Dishes. Spoon. 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 The plural form of spoon will be spoons. 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 Okay, so in this way we have to change these nouns into their plural form. इसी तरीके से हमें इन सारे nouns को इनके plural form में change करना है. Now see the third and the last section, which is of EVS. Write the names of young ones of these animals. गिवन एनिमल्स के यंग वंस मीन्स उनके बेबीज़ के नेम राइट करना है कि एनिमल्स के बेबीज़ को हम क्या कहते हैं. लायन के बेबी को क्या कहते हैं, कैट के बेबी को क्या कहते हैं. ओके. बेबी यहाँ पे यंग वंस मीन्स बेबी, उनके यंग्स. ओके. लायन के बेबी को हम क्या कहते हैं, लायन के यंग वन को कहते हैं कब. CUB. कब. CUB. कब. कैट के बेबी को क्या कहते हैं, यंग वन ऑफ कैट. किटन. KITTEN. किटन. डॉग के बेबी को क्या कहते हैं, यंग वंस ऑफ डॉग. पपी. PUPPY. पपी. यंग वंस ऑफ हॉर्स. हॉर्स की बेबी को क्या कहते हैं, कॉल्ट. COLT. कॉल्ट. गोट की बेबी को क्या कहते हैं, किड. KID. किड. Okay, so in this way we have to name the young ones. Okay, इस तरीके से सारे एनिमल्स के young ones का नेम हमें यहाँ पर राइट करना है. I hope you all have understood how to solve these sheets. If you still have any kind of doubt related to any topic, any subject, any question, you can ask me. Thank you.